हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मिंत्रा। मैं आप लोगों के साथ बिहार स्टेट STET कंप्यूटर साइंस का एग्जामिनेशन के लिए चैप्टर वाइज मॉडल क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। हेयर आई एम डिस्कसिंग द फिफ्थ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, नेमली ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडल क्वेश्चन पार्ट 5। हेयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। A file is an abstract data type, logical storage unit, usually non-volatile, and all of these. The right answer is all of these. फाइल abstract data type होता है, logical storage unit होता है, usually non-volatile भी होता है। तो सही आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइल एट्रीब्यूट्स आर नेम, टाइप, लोकेशन, ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दिस होगा। फाइल एट्रीब्यूट्स नेम, टाइप, लोकेशन सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम सपोर्ट्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइल। सिस्टम सपोर्ट्स 2 टाइप्स ऑफ फाइल। फर्स्ट इज टेक्स्ट फाइल एंड एग्जीक्यूटेबल बाइनरी फाइल्स। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल एक्सेस मेथड्स आर सीक्वेंशियल एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस, बोथ 1 एंड 2। यहाँ पे सही आंसर बोथ 1 एंड 2 होगा। फाइल एक्सेस मेथड एक इंडेक्स्ड फाइल एक्सेस मेथड भी होता है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे आंसर 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2 होगा। सीक्वेंशियल एक्सेस मीन्स दैट ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज एक्सेस्ड इन प्रीडिटरमाइंड एंड ऑर्डर्ड सीक्वेंस। और डायरेक्ट एक्सेस में क्या होता है, इन डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑल रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। The records are randomly placed throughout the file. Next question is the simplest directory structure is single level directory. In single level directory, it is simplest directory structure. In single level directory, all files are contained in same directory, which makes it easy to support and understand. तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, paths name are, options are डायरेक्ट पथ, अब्सोल्यूट पथ, रिलेटिव पथ, बोथ 2 एंड 3। इसका सही आंसर बोथ 2 एंड 3 होगा। ऑप्शन ए डायरेक्ट पथ डायरेक्ट एक्सेस होता है, डायरेक्ट पथ नहीं होता है। अब्सोल्यूट पथ और रिलेटिव पथ सही आंसर है, तो ऑप्शन डी बोथ 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्ट्रक्चर प्रोहिबिट्स द शेयरिंग ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। ट्री स्ट्रक्चर, 1 लेवल स्ट्रक्चर, 2 लेवल स्ट्रक्चर, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर ट्री स्ट्रक्चर होगा। In tree structure, a single file is saved in multiple directory, so we cannot able to share the file in tree data structure. Next question is external fragmentation solved by contiguous allocation, linked allocation, indexed allocation, both 2 and 3. तो external fragmentation both 2 and 3 linked allocation और indexed allocation के द्वारा solve किया जा सकता है। contiguous allocation suffered from both internal and external fragmentation. So right answer is option D, both 2 and 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ट मेथड फॉर एलोकेशन इज। इसका सही आंसर लिंक्ड एलोकेशन होगा, बिकॉज इन दिस स्कीम ईच फाइल इज ए लिंक्ड लिस्ट ऑफ डिस्क ब्लॉक्स विच डिड नॉट बी कंटिग्यूअस। दिस इज वेरी फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ फाइल साइज. File size can be increased easily since the system does not have look for a contiguous chunks of memory. So the right answer is linked allocation. Next question is file can have रीड एक्सेस, राइट एक्सेस, कॉपी एक्सेस, ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर ऑल ऑफ दिस होगा। फाइल हैव रीड एक्सेस, राइट एक्सेस एंड कॉपी एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस टाइम इज द हाईएस्ट इन द केस ऑफ फ्लॉपी डिस्क, कैश, मैग्नेटिक डिस्क एंड स्वैपिंग डिवाइसेस। इसका सही आंसर मैग्नेटिक डिस्क होगा। एक्सेस टाइम मैग्नेटिक डिस्क में सबसे ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइल स्ट्रक्चर दैट redefines its first record at a base of 0 uses the terms रिलेटिव ऑर्गेनाइजेशन, की फील्डिंग, डायनेमिक रिलोकेशन एंड हैशिंग। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, रिलेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ए रिलेटिव रिकॉर्ड फाइल कंटेन्स रिकॉर्ड ऑर्डर्ड बाई देयर रिलेटिव की। सपोज एट द 0th लोकेशन इट इज स्टार्ट विथ 0, फर्स्ट रिकॉर्ड शुड बी एड्रेस्ड विथ 1 रिलेटिव की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पार्टीशन डेटा सेट इज मोस्ट यूज्ड फॉर। Options are a program or source library, storing program data, storing backup information, storing ISAM files. इसका सही आंसर ए होगा, ए प्रोग्राम और सोर्स लाइब्रेरी। ए पार्टीशन डेटा सेट इज मोस्ट यूज्ड फॉर प्रोग्राम और सोर्स लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए मैग्नेटिक डिस्क डेटा इज रिकॉर्डेड इन ए सेट ऑफ concentric tracks which are subdivided into. Options are periods, sectors, zones, group. तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, सेक्टर्स। Magnetic disks are subdivided into sectors.
Next question, boundary registers are used for temporary program variable storage, are only necessary with fixed partition, track the beginning and ending of the program, track page boundaries. इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, बाउंड्री रजिस्टर ट्रैक द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द प्रोग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैप टेबल should be as large as possible, should be completely fastest hardware, allow page to be located when referenced, is not necessary in the latest operating system. The right answer is the map table allow page to be located when referenced. Option C is the right answer. Next question is, the most efficient data set organization is a sequential file, an ISM file, a partitioned data set, variable depending upon using of the data set. Next right answer is variable depending upon usage of the data set. Option D is the right answer. Most efficient data set organization is variable depending upon usage of the data set. Next question is, a partitioned data set is most used for. Options are storing program data, storing ISM file, storing backup information, a program or source library. Right answer is a program or source library. Next question, the allocation map is used to store program data, is updated by application program, allow program to erase files, specify which blocks are used by which file. The right answer is the allocation map specifies which blocks are used by which files. Option D is the right answer. Next question, which type of file organization are supported by magnetic tape? Options are random files, contiguous sequential file, index sequential file, all of these. Contiguous sequential file is the right answer. Magnetic tape supported by contiguous sequential file. Next question, dash is a unique tag, usually a number identifies the file within the file system. इसका सही आंसर फाइल आइडेंटिफायर होगा. फाइल आइडेंटिफायर इज ए यूनिक टैग, यूजुअली a number identify the file within the file system. Next question is, which file is a sequence of bytes organized into blocks understandable by the system linker? Right answer is object file. इसका सही आंसर ऑब्जेक्ट फाइल होगा. Next question, what is the mounting of file system? Options are creating of a file system, deleting a file system, removing the portion of the file system into a directory structure, attaching portion of the file system into a directory structure. Right answer is mounting of file system means attaching portion of the file system into a directory structure. Option D are the right answer. Next question is, mapping of file is managed by file system, page table, virtual memory, file metadata. Right answer is file metadata. Mapping of file is managed by file metadata. Next question is, management of metadata information is done by logical file system, file organization module, basic file system, application programs. Right answer is logical file system. Management of metadata information is done by logical file system. Next question, what is raw disk? Disk without file system, empty disk, disk lacking logical file system, disk having file system. So right answer is raw disk बोलते हैं, disk without file system. Option A are the right answers. Next question is, the data structure used for file directory is called mount table, process table, hash table and file table. The right answer is hash table. The data structure used for file directory is called hash table. Hash table is a data structure which stores data in associative manner. In hash table, data is stored in array format. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, हैश टेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्रिएट ए न्यू फाइल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कॉल्स बेसिक फाइल सिस्टम, लॉजिकल फाइल सिस्टम, फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल, नन ऑफ दीज. सही आंसर इज लॉजिकल फाइल सिस्टम. टू क्रिएट ए न्यू फाइल एप्लीकेशन प्रोग्राम कॉल्स लॉजिकल फाइल सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेटा कैन नॉट बी रिटेन टू सेकेंडरी स्टोरेज अनलेस रिटन विद इन ए फाइल. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फाइल. इजी क्वेश्चन है. Next question is, a file is an private, primitive, abstract or public data type. The right answer is abstract data type. A file is an abstract data type. Thank you for watching the video. Like the video and subscribe the channel. Thank you.